Hey everybody, welcome to Vasu's Vegetarian Kitchen, where I believe I'm Mr. Star. I hope you all are doing well and safe here in the world. If you haven't subscribed to my channel yet, subscribe now and hit that bell icon so that you are notified of my new videos. What am I making today? I'm making, I have already prepared idli here in my idli cooker, as you can see. If I can pan my thing, it's ready. So I'm here making now onion and tomato chutney. So I've heated here 2 tablespoons of gingelly oil, and I've added 1 dried red chilli. To this I'm going to add half a ladle of Urid Dal, whole Urid Dal, for taste, and it'll, believe me, it tastes amazing. If you haven't tried this way, try this and do let me know your feedback and suggestions. So then give it a bit of saute it, allow it to go to a consistency of golden brown in color. जब तक ये golden brown कलर हो जाता है तब तक आपको इसको सॉटे करना पड़ेगा. तो उसमें डालिए, मैंने यहाँ आधा करची या आधा लेडल मैंने उड़द दाल डाल दिया है. अब इसमें डालना है टेस्ट के लिए और आधा करची या आधा लेडल चना दाल. बस ये आप ट्राई करके देखिए. अगर आपने अभी तक ऑनियन और टमाटर की चटनी इडली या डोसा के खा सकते हैं, सैंडविच के बीच में रख के खाइए, आपको मज़ा आ जाएगा. और ये होममेड है, हेल्थी है. तो मैंने यहाँ पर 5 टमाटर और 2 ऑनियन प्याज लिए हुए हैं, मैंने डाइस करके रखा हुआ है. सो आई हैव डाइस्ड इट अप. So I am sauteing it, tempering it, let it come to a golden brown consistency. Look how rich they are in color. Can you see this? So if you are liking this video, hit that thumbs up and like, share and subscribe to my channel. Like this video, share this video with your family and friends to the maximum, and subscribe to my channel. And also press that bell icon so that you are notified of my new videos. And also check out my new podcast channel, Just Ask Latest Podcast. So add a little bit of hing powder to it. You can add or avoid. I'm adding it for digestion. If you want to add, you can add onions to it and give it a saute it till they have come to a consistency where they have this shiny consistency or kind of a glass, where they look like glass, or to the consistency till when they become shiny. So I'm going to do that. I'm going to saute my onions first. So I'll show you once they come to that consistency. Then I'll add the tomatoes. Then we need to add tamarind and salt to it, and then we need to grind our chutney. So this is what I have kept, as this is a small, quantity of tamarind, which I'm going to also saute it with the onion and tomatoes. So I'll show you once both are ready. Meanwhile, subscribe to my channel. So they've come to they have actually got that shine in their texture. So I'm going to add the tomatoes. I'm going to saute them together. Do try this method and do let me know. It will be really tasty for you.
and I don't add garlic to my chutneys at all. So this is purely an onion and tomato chutney. For you can have it for, आप इसको डोसा के साथ खा सकते हो, इडली के साथ खा सकते हो, सैंडविच के बीच में रख के एक स्प्रेड के तरह रख सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, चपाती के साथ तो डेफिनेटली क्यों नहीं, और इसको चावल के साथ भी आप खा सकते हो। चावल के साथ भी एक चटनी स्प्रेड के साथ आप मिला के खा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे लाइक, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब नहीं किया है, और इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो ये अभी हो गया। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, ये इमली डालने वाला हूँ, और इसमें मैं डालने वाला हूँ salt accordingly. I'll show you once. So if you are looking at it right now, the state of the tomato and onion, they have cooked well. So allow it to cool for for 5 to 7 minutes. Let it cool, then I'll grind it, and our onion and tomato chutney will be ready for idli. So if you are liking this video, and if you like this video, please watch the video till the end so that you get the idea of the recipe. And if you have any suggestions or questions for me, please do let me know in the comment section below. अगर आपके पास कोई सुझाव या सजेशन या एडवाइस हो इस वीडियो के बारे में या चैनल के बारे में, या आपको और कोई रेसिपी आपको देखनी है तो इस चैनल में, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और मैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और वो बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। ये अच्छी तरह पक गए हैं दोनों। इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट तक के लिए इसको कूल होने, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैं इसको पीस दूंगा मिक्सी में। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इडली और टमाटर और प्याज की चना दाल की चटनी। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। देखने के लिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, एंड ऑलवेज बिलीव एवरीवन इज अ स्टार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और tomato and onion chutney for idli is ready. Look at this, how soft these idlis are, and here is our onion and tomato chutney. So if you like this video, please do not forget to subscribe to my channel and hit that bell icon so that you are notified of my new videos. Please like this video, share this video, and subscribe to my channel. Thank you.